Good morning, everyone. Today we will be discussing about the oscillators, the last topic which is left in electronics. Let me just share the screen. Wait a minute. Yeah. So today we'll discuss about the oscillators and why do we need the oscillators. So as we have seen that there are many applications where we need variable frequencies or variable frequency supplies. For example, our audio signals. Audio signals has range from 20 hertz to 15 kilohertz. They need these frequencies for generating the carrier signals for transmitting the signals in communication systems. In that also AM radios they need frequency from 535 to 1605 kilohertz. FM radios they are even more than that, 88 to 108 megahertz. The DTH which comes to your home, direct to home services, they needs even more frequency band, 1 to 18 gigahertz. And satellite communication happens at even greater band, that is 1 to 40 gigahertz. इवन सम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस जो इलेक्ट्रिक हीटिंग रहते हैं, तो उनमें दो तरह के एप्लीकेशंस है, दो तरह के हीटिंग टाइप्स है जहाँ पे हमें वी नीड मोर फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक हीटिंग they need supply from 5 megahertz to 30 gigahertz. And induction heating, they need the frequency or supply frequency of 5 kilohertz to 27 megahertz. Microwave heating, they needed about 2.4 gigahertz. So this much of frequency, supply frequencies are required in various applications. We'll discuss about the dielectric heating, induction heating more in detail in next semesters in the course of UAA. So currently, we have concluded that we need supply of various frequencies, right from few hertz up to gigahertz. एंड सपोज अगर ये हमने ये फ्रीक्वेंसीज अगर हम नॉर्मल जैसे हम 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरेट करते हैं, उसी तरह से अगर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करना अगर हमने सोचा, तो वी नीड एन अल्टरनेटर. अभी अल्टरनेटर का हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इंडक्शन मोटर एंड वहां पे हमने सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला देखा था विच इज 120 एफ बाई पी. तो ये 120 एफ बाई पी से अगर हमने एफ का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला, so it comes out to be f is equal to ns into p by 120. Let me write it quickly. ns, which is the speed of rotating magnetic field in induction motor. इसका फॉर्मूला है 120 f by p. And this is also the case in case of alternators जो हमारे AC सप्लाई जनरेट करते हैं in power stations. हमने धानु पावर प्लांट में देखा that we have the AC generators. तो AC generators में भी हमें we require magnetic field which rotates at ns is equal to 120 f by p, and all that f is frequency, p are the number of poles. तो अगर इसमें से हमने f का फॉर्मूला निकाला, दैट इज फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसका फॉर्मूला विल बी ऑब्वियसली ns into p by 120. तो अगर हमें हायर फ्रीक्वेंसी का सप्लाई जनरेट करना है अप टू सम मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज, देन ऑब्वियसली हमें ns मतलब सिंक्रोनस स्पीड, जो स्पीड पे हमारा जनरेटर रोटेट होता है, एंड नंबर ऑफ पोल्स p, वो हमें बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे विच इज ऑब्वियसली नॉट प्रैक्टिकेबल. एंड फॉर दैट हम हमारी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज करके we cannot generate a supply of higher frequencies of megahertz and gigahertz. And for that purpose, what we need is oscillator. Oscillator is the device which can generate variable frequency supply.
So the circuits which we discussed, applications जो हमने अभी कुछ मिनट पहले डिस्कस किए, वहां पे हमें अल्टरनेटिंग सप्लाई चाहिए ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज. सो दोज फ्रीक्वेंसीज जनरेट करना हमारे कन्वेंशनल अल्टरनेटर का काम नहीं है. वो जनरेट करने के लिए हमें ऑसिलेटर ही यूज करना पड़ेगा. अल्टरनेटर्स हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज हमने देखा दैट एफ इज इक्वल टू एन एस इंटू पी बाई 120. तो अगर एफ हमें बहुत ज्यादा चाहिए तो हमें एन एस एंड पी इम्प्रैक्टिकेबल तरीके से इंक्रीज करने पड़ेंगे विच वी कैनॉट डू. And that is why we go for oscillators. Now in oscillators, we have two types. One is sinusoidal, जो sinusoidal frequencies generate करते हैं. उसमें और types हैं. एक है RC phase shift जो हम पढ़ने वाले हैं, which is there in RC syllabus. Another is there are tuned circuits with the help of R and L. Tuned circuit. And there are some crystal oscillators. Right now we are interested in RC phase shift. And another type is non-sinusoidal, जो non-sinusoidal, especially square wave generate करते हैं. They generate square wave, and they are called as, those circuits are called as multi-vibrators. So maybe in future, when you learn electronics or you learn EDC, electronic circuit design, you may learn about multi-vibrators. So right now, we are interested in oscillator, which is a RC phase shift oscillator. Now we'll move to the concept of oscillator. So before moving to the concept of oscillator, we need to know about the feedback. Feedback is very important concept, not only for the oscillators or not only for the electronic, but control systems may be feedback. And not only control systems. In fact, in life, every day, we knowingly, unknowingly, हम feedback देते रहते हैं. For example, now we are discussing in the class. So I may not be able to see you right now, but I'm sure that जब ये video आप देखोगे, that time I'll receive the feedback. So feedback is very important in life as well, because if there is no feedback, I won't be able to understand कि जो system चल रही है वो बराबर चल रही है या नहीं. If system is not getting any response from the output, जैसे हम क्लास में बताते रहते हैं कि समझा नहीं समझा, बोलो कुछ तो जवाब दो. It is that what we seek feedback from you. So feedback in amplifiers is also equally important, because amplifier का काम है, हमें पता है, it gives us gain, voltage gain, maybe power gain. It gives us input output impedance, then it works at particular bandwidth. ये सारे amplifier के characteristic है. एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शायद कभी चेंज हो सकते हैं. हमने देखा था कि अगर बायसिंग चेंज हुआ, अगर हमारे पैरामीटर्स चेंज हुए, अगर हमारा ट्रांजिस्टर इटसेल्फ हमने सेम ही सीरीज का भी डाला तो भी उसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं. तो अगर ये पैरामीटर्स मुझे चेंज नहीं करने, इफ आई हैव स्ट्रिंजेंट requirement of the characteristic like voltage gain, input output impedance, bandwidth. So ये parameters, if I need to keep them unchanged, then the best way is to introduce the feedback. Because feedback क्या करता है? Feedback is the process. I'll mention it over here. Feedback is the process of taking a part of output signal and feeding it back to
इनपुट सर्किट। तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि पैरामीटर्स चेंज हो गए, और यो बीटा और आपके अगर बायसिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हो, तो ये इनपुट साइड को कैसे समझेगा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। नॉर्मली सिस्टम कैसा रहता है, यू हैव अ सिस्टम हियर, दिस इज अ ब्लॉक एंड दिस इज सिस्टम। तो हमारा जो एम्पलीफायर है, हमारा वीसीसी प्लस वीसीसी, देन हमारा ट्रांजिस्टर, everything, all the registers of biasing, then the capacitors, the coupling capacitor, bypass capacitors जो हमने देखे, अगर मल्टी स्टेज है तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे। So in this system we give the input, this is the input, and we get the output. And output is not only dependent on input, but it also depends on system. और अगर सिस्टम में कुछ चेंज होता है, इवन इफ यू गिव कंट्रोल्ड इनपुट, मतलब जो एक्सपेक्टेड इनपुट या रेगुलेटेड इनपुट, नॉमिनल इनपुट आप दोगे, तो भी आपको आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा, बिकॉज सिस्टम में इटसेल्फ कुछ गड़बड़ है। तो ये हम कैसे रेक्टिफाई करें? तो व्हाट वी डू इज we take some output signal and we give it to system or we give it to input side. This is feedback. तो जब हम फीडबैक इनपुट साइड पे देते हैं तो सिस्टम को समझ में आता है कि जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो तो आ ही नहीं रहा, एंड जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो नहीं आ रहा है, तो उसको लाने के लिए, वो उतना आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए हमें सिस्टम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। तो अगर हमारे पास फीडबैक नहीं है तो वो सिस्टम को कहा जाता है ओपन लूप सिस्टम, और जो सिस्टम में फीडबैक होता है उस सिस्टम को कहा जाता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। So right now we want the feedback, so we will not talk about the open loop system जहाँ पे feedback नहीं है. We will speak about the closed loop system जहाँ पे feedback है. So if this is your amplifier, and it has a gain of A. From here I will give the input. Input, let's say it is Vi. This is plus. Now I am showing the instantaneous polarities. जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर के लिए भी इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज डॉटेड सर्कल से दिखाए थे. These are the instantaneous polarities. At the output, you get some voltage, which is VO. Okay. All right. Now, before showing the polarity of this VO, let us come back. Something which we had learned in biasing. We had fixed some good, or we had commented about some good operating point in biasing. और ये डायग्राम अगर आपको याद है, so this is the diagram of BJT amplifier, the small signal amplifier. And here हमने एक इनपुट दिया है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है C पॉइंट पे, जो परपेंडिकुलर करके ये हमने इनपुट दिया है. दिस इज द इनपुट, एंड उसको हमने एम्पलीफाई किया एट बाय सेटिंग सम IB. बेस करंट को हमने सेट किया एट IB एंड वी फिक्स्ड दिस कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ पे हमने बाइसिंग से इसको सेट किया ये पॉइंट पे, एंड देन वी गॉट द आउटपुट. तो आउटपुट में जो करंट आता है, दिस इज IC करंट. दिस इज ओके. दिस इज जैसे हमारा इनपुट जा रहा है पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, so IC is also going in the same way. पहले पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव के लिए नेगेटिव साइकिल. बट I want to show और I want to emphasize on VCE. अभी ये जो हमने VCE को यहाँ पे प्लॉट किया है,
जो VC ऑन डाउनवर्ड साइड, ये VC का प्लॉट है। तो VC में आप देख सकते हैं कि जो साइकिल पॉजिटिव में जा रहा है, एक्चुअली जब वो VC में रिफ्लेक्ट होता है वो नेगेटिव में जाता है, एंड जब ये साइकिल नेगेटिव में जाता है तब VC पॉजिटिव होता है। So what this shows that there is a phase shift. There is a phase shift, and how much is the phase shift? हमारे अगर ये हमें सेपरेटली ड्रॉ करने रहेंगे, लेट मी क्विकली ड्रॉ दोज। So if this is V in, this, let's say VI, IB will also come in the same manner, same, this is IB, same phase. Then comes IC, हमने यहाँ पे देखा that they are both are in the phase. Is also here. But what about VCE? VCE is first going negative and then positive. This is VCE. So here we can see that there is a phase shift. इसका पॉजिटिव स्टार्ट होने का पॉइंट IC, IB, VI, ये सबका पॉजिटिव स्टार्ट होने का पॉइंट इधर है, बट VC का पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने का पॉइंट इधर है, एंड ये दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर इज एन एंगल of 180 degree. So we call this that there is a 180 degree phase shift in the output voltage at the output terminals of a transistor. And that is why when I show the, अभी जो फीडबैक का मैंने सर्किट निकाला था, so when I show the output, अगर ऊपर वाला terminal अभी positive at this instant, if the upper terminal is positive with respect to the lower terminal, then at the output side, lower terminal is positive with respect to upper terminal at that instant. Because हमने देखा there is a 180 degree phase shift. So what I need to do to give the feedback? यहाँ पे भी ये phase shift आएगा, VO. This is VO dash. Now I'll tell you why it is VO dash. At the output of the amplifier, it is VO. From this VO, मुझे थोड़ा part लेना है. I need to get some part out of this, and I need to feed that back at the input side. I need to feed this back to the input side through some feedback circuit. Let us assume that this feedback circuit has a gain of beta. So output का कुछ part निकाल के I have given it to the beta, and beta का जो output है, beta again gain is beta, so it will have an output of beta. Beta into यहाँ पे आया है VO dash, so VO dash we have taken beta into VO dash. So let's say this is the negative terminal, this one, so it will have a negative polarity here because this is not going to have any phase shift. And this we are going to feed in the input side. Okay. So depending upon how you feed this to the input side, abhi ye, let's say that this beta VO dash is equal to VF because it is feedback voltage. So if this VF is out of phase, मतलब अगर ये पॉजिटिव मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया एंड ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, so the voltage available over here VI dash क्या होगा, VI minus VF होगा. So if it is minus, if
Vi dash is equal to Vi minus Vn. Then it is a negative feedback. Because हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो कम हो रहा है, इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज which is Vi dash. So this is a negative feedback. Negative feedback if you have in the system, then obviously आपका जो gain है वो gain भी कम होता है. There is a mathematical expression and mathematical derivations for the gain, overall gain of the system. But as it is not a part of our syllabus, so I'm not going in detail of it. If you give negative feedback in the system, then obviously the disadvantage that gain, the output voltage, net input voltage, everything reduces. आपका आउटपुट भी रिड्यूस होगा बिकॉज आप ऑब्वियसली आप वहां से यू आर टेकिंग आउट सम सिग्नल, आप इनपुट में वो नेगेटिव तरीके से दे रहे हैं इसीलिए वो भी कम होगा, इसीलिए वो भी कम होगा. And there is a mathematical expression that if you have a negative feedback, I'm directly writing the expression. The feedback for negative feedback का ये gain है, which is equal to A upon 1 plus beta A. So obviously beta is non-zero. So आपका denominator will be obviously a positive integer, and that is why AFN will be obviously lesser than A. AFN lesser than. मतलब आपका ओवरऑल गेन भी रिड्यूस हो. बट फिर भी नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज करते हैं? बिकॉज देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेगेटिव फीडबैक, such as increased stability of the system, it reduces gain and noise and distortion. जैसे वो gain को reduce करता है तो वो noise and distortion को भी reduce करता है. Input impedance बढ़ता है, output impedance decrease होता है, bandwidth is increased. So all these are very मतलब negative feedback के ये सारे positive features हैं, and that is why negative feedback is used in amplifiers many a times. Okay, actually ये feedback का concept is more in the control system, and if you learn control systems in degree, probably that time you will come to know. But right now we are not interested in negative feedback also, because in oscillators there is nothing like negative feedback, but there is something like positive feedback जो और कहीं ज्यादातर यूज नहीं होता है. So positive feedback में जैसे अभी यहाँ पे देखा हमने, we have reduced the input. Positive feedback में what we'll do is they feed the feedback signal in phase with the input, so that net input is increased. So here I have positive. So it is like two batteries connected in series. Positive, negative, positive, negative. So overall Vi dash will be Vi plus Vn. So now we'll discuss about the positive feedback. If Vi dash is equal to Vi plus Vn, then it is called as a positive feedback. Okay. So voltage is given in same phase as the input phase, then you get the positive feedback. And as we had written that formula for the gain of positive feedback, it is A upon 1 minus beta A. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे that your denominator is decreasing because beta is positive, A is positive. So your denominator will decrease, and therefore AFP is greater than A. This is what is achieved in positive feedback. But जैसे negative feedback के जो advantages थे, distortion, stability,
वो सारे एडवांटेजेस यहाँ पे डिसएडवांटेज बन जाएंगे. इन पॉजिटिव फीडबैक यू हैव पुअर डिस्टॉर्शन और मोर डिस्टॉर्शन एंड पुअर स्टेबिलिटी. But still we use positive feedback. And positive feedback हम use करते हैं जहाँ पे हमें oscillator बनाना है. So now I'll speak about positive feedback in amplifier. अगर हमने positive feedback use किया तो हमारा oscillator कैसे बनेगा? Oscillator जो मुझे variable frequency supply देगा. So let me start with the positive feedback amplifier as an oscillator. Okay. So oscillator, what oscillator does actually, oscillator generates oscillator generates AC output signal without input AC signal. Isn't it very surprising? कुछ मैजिक जैसा लग रहा है कि हमने इनपुट एसी सिग्नल दिया नहीं फिर भी we are getting output AC signal. And who is doing this? Who is behind all this? The feedback circuit. So the feedback signal, यहाँ पे होता क्या है, द फीडबैक सिग्नल जो हमने आउटपुट से लिया है. सो मे बी इनिशियली हमने कुछ कुछ नॉइज या कोई डिस्टर्बेंस या कोई वेव इनपुट साइड पे दे दी, उसके वजह से कोई आउटपुट जनरेट हुआ और वो आउटपुट का कुछ पार्ट हमने एज अ फीडबैक दिया. सो दैट फीडबैक सिग्नल स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ इनपुट. वही एज अ इनपुट वर्क करता है एंड देन द ऑसिलेटर गोज ऑन प्रोड्यूसिंग सम फ्रीक्वेंसी. तो फीडबैक सिग्नल which is a part of output is the only input to internal amplifier. Because amplifier तो हमें पता है, amplifier को हमने कोई भी इनपुट दे दिया तो amplifier उसको amplify करने का काम कर लेगा if we have given the biasing properly. तो ऐसा नहीं है that हमने oscillator को कोई भी इनपुट नहीं दिया है. कोई भी चीज विदाउट इनपुट नहीं चलती है. हमें पता है there is a law of conservation of energy. तो हम ऐसा नहीं है, there is no input to the oscillator. Input is given but that input जो है हमारा वो जो बाइसिंग का वीसीसी प्लस वीसीसी वगैरह है वो इनपुट हमने दिया हुआ है. एंड आउटपुट का जो सिग्नल हमने फीडबैक करके इनपुट साइड पे लगाया है दैट इटसेल्फ एक्ट्स एज द इनपुट. तो उसको और एक्स्ट्रा इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है. इट गोज ऑन ऑसिलेटिंग. जैसे आपका फीडबैक आएगा वो फीडबैक के हिसाब से इंटरनल एम्पलीफायर गेन देता जाएगा एंड इट विल गो ऑन ऑसिलेटिंग. So let me draw the circuit diagram for this, a block diagram for this, not a circuit. This is the internal amplifier which has gain of A. This is the feedback circuit gain which is beta. Here you get the output which is VO. हमने देखा that it is out of phase, so that is why I have shown positive instantaneous polarity because it is AC. And then we feed it back into the feedback circuit. तो यहाँ पे हमें मिलेगा A into V. If we are getting, yeah, because if we are giving A here, somehow we are getting B here.
At the feedback side, I'll get A into B into V. Beta will get multiplied, gain है वो circuit का. And this will be fed back at the input side of the amplifier. This is the block diagram of positive feedback amplifier as an oscillator. So you have amplifier जिसका हमने positive feedback दिया है, and without the input signal at the input side, initially obviously you require some signal to start this, because हमारे पास और ऐसे तो बहुत सारे waves हमें मिल जाते हैं. So initially you will need some wave to or some frequency to start this, and then you can change the frequency as per your requirement because feedback is given. So initially this V may be required. ये जो V हमने दिया है initial supply. So this V would require initially V drives input terminals of the amplifier. Then amplified voltage. तो amplifier क्या करेगा? ये signal को amplify करेगा. Amplified voltage, which is A into V. A is the gain. Amplified voltage drives the feedback network to produce. What feedback will produce? Feedback network has a gain of beta. So it will produce A into beta into V. The B, you can write it as beta into AV. Same. Okay. So if the phase shift जो हमें एम्पलीफायर के आउटपुट में मिलती है वो phase shift अगर हमने करेक्ट कर ली और एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज जो है वो अगर हम सेम फेज में लेके आए, सो द सिग्नल गिवन जो हमने इनपुट साइड पे दिया है, it will be same in the phase as or the output is same is in the phase with the input जो हमने पहले इनपुट दिया था. So सिर्फ ऑसिलेटर या सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक विल नॉट मेक योर ऑसिलेटर एज सच. ऑसिलेटर अगर आपको बनाना है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव फीडबैक तो चाहिए जो हमारा आउटपुट से आउटपुट के वोल्टेज का कुछ पार्ट लेके इनपुट पे फीड करेगा इन दी पॉजिटिव सेंस. बट उसके साथ साथ अगर वो पॉजिटिव सेंस में चाहिए तो हमें इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज दोनों सेम फेज में होने चाहिए. तो वो फेज को करेक्ट करने के लिए ऑल्सो यू नीड समथिंग विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो द फीडबैक सिग्नल एबीवी, ये जो हमें फीडबैक सिग्नल आया है वो हमारे इंटरनल एम्पलीफायर जिसका गेन ए है उसको ड्राइव करेगा. तो ड्राइव करेगा, सो देयर विल बी 3 केसेस. अगर ये ए बी जो है इफ इट इज लेस देन 1, केस नंबर 1, इफ ए इंटू बीटा इज लेस देन 1, तो क्या होगा? ए इंटू बीटा इंटू वी विल बी लेस देन वी, राइट? अगर a into beta is less than 1, so into a into beta into v is less than v, and therefore जो आपके आउटपुट में सिग्नल जो बनेगा it will be always lesser than the input signal. ABV is the feedback जो as a input काम करेगा later on, but जो पहले हमने input दिया था which is v, अभी जो हमें input आ रहा है ABV is always lesser than v, and that is why the output signal will die out. How it will die out? Let me draw the waveform for this.
will die out like this. Why? Because इनफ वोल्टेज हमने रिटर्न ही नहीं किया इनपुट पे. इनपुट पे इनफ वोल्टेज आया ही नहीं जिसका हम गेन लेके वो आउटपुट पे जाए, जिसको हम गेन से जोड़ के वो आउटपुट पे जाए. एंड दैट इज व्हाई the output will die out. Another case is a case where AB is or A into beta is greater than. So obviously A into beta into V will be greater than V. And therefore जो हमारा केस 1 में हुआ exactly opposite यहाँ पे होगा. केस 1 में the oscillations died out, whereas in this case oscillations will build up. So oscillations will start like this and they will grow in amplitude because gain is more. Okay. But we, as an oscillator, we do not need either the oscillations die out case or even this case 2 जहाँ पे oscillations बढ़ रहे हैं. हमें वो केस चाहिए जहाँ पे हमारा ऑसिलेशन आउटपुट और आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी, आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे. एंड दैट इज द थर्ड केस व्हिच वी डिजायर. केस नंबर 3, if A into beta is equal to 1. So obviously A into beta into V is equal to V. So there is no change in input. जो इनिशियल इनपुट से हमने ड्राइव किया था एम्पलीफायर को, अभी भी वही इनपुट एम्पलीफायर पे जा रहा है, जिसके वजह से हमारा जो आउटपुट है आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहेगा. दिस इज व्हाट इज डिजायर्ड एज एन ऑसिलेटर. ओके. सो इन इनिशियल पार्ट हमने देखा था गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर. which is AFP हमने लिखा था उधर. This is equal to A minus 1 minus beta A because it is positive feedback. Okay. So if in this case अगर हमने जो ये थर्ड केस ऊपर डिस्कस किया, if A into beta is 1, तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर जो है 1 minus 1 0 हो जाएगा. एंड AFP जो है मतलब वो फीडबैक द गेन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, complete circuit, it will become infinite. So gain becomes infinite. So there is output without any input. मतलब gain का फॉर्मूला हमें पता है. Gain is equal to output upon input. So if it is a voltage gain AV, then it is VO upon VI. तो अगर ये infinite, if this is infinite, it means that आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया ना. इनफाइनाइट कब आएगा? जब ये डिनोमिनेटर 0 हो गया. मतलब you have 0 input VI and you are getting the output. So in this case, your amplifier becomes oscillator. कि आपने कोई इनपुट सिग्नल ही नहीं दिया है, there is no VI, VI is equal to 0, still you are getting some VO.
and therefore when this occurs when A into beta, हमारे जो गेन है, गेन ऑफ एम्पलीफायर एंड गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट, उनका मल्टीप्लीकेशन, ए प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बीटा इज 1. इसको कहते हैं बार्कहाउज़ेंस क्राइटेरिया. ऑब्वियसली द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये इन्वेंट किया, बार्कहाउज़ेन criteria of oscillation. And this is how the oscillator is made. No input, still you are getting output. This is the basic idea behind the oscillator. Now we have discussed about the positive feedback which is required for oscillator. उसके लिए क्या condition होनी चाहिए to for the oscillator to work. But remember मैंने एक point mention किया था that only positive feedback will not give you oscillator. Because हमने देखा that in the amplifier, my VC output voltage is phase shifted by 180 degrees. And if I need to address this, then I need to first address, या पहले जो मुझे काम करना पड़ेगा ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट को निकालने का काम. ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट को समहाउ अगर मैंने अवॉइड किया और इनपुट आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के फेज में इफ आई बी एबल टू गेट, देन वही वोल्टेज इनपुट साइड पे फीड करने के बाद मुझे without any input, external input obviously, only with the feedback I'll be able to get the oscillations without any external input signal. Okay, so ये जो phase shift हमने देखा है in basic electrical also, ये जो phase shifts आते हैं ये किसके वजह से आते हैं in basic electrical? पावर फैक्टर क्यों आता है? It is because of the inductors and capacitors mainly. तो वहां पे हमें वो पावर फैक्टर यूनिटी हम रखने का बहुत, वी ट्राई हार्ड टू कीप इट यूनिटी. एंड हियर हमें वो जानबूझ के 180 डिग्री चाहिए, दैट फेज एंगल. नाउ आई वांट टू शिफ्ट दैट आउटपुट बाय 180 डिग्री. तो अभी भी हम उन्हीं का सहारा लेंगे. कैपेसिटर्स आर जनरली, दे आर compared to inductors, there is a lesser loss in the capacitor, so we will prefer the lesser lossy circuit and we will build the phase shift circuit with the help of capacitors. Only capacitors will not do because capacitors का जो output है आपको लेना पड़ेगा resistance के across. वो space shift किया हुआ output आपको resistance के across लेना पड़ेगा. So you need a circuit comprising R resistors and C capacitors, and that is why we call that circuit as RC phase shift circuit, and that forms our oscillators. So let us first talk about the RC phase shift. The unwanted part, let me just already there in transistor. So let us discuss about the phase shift. और फेज शिफ्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. हमने देखा हाउ द VCE इज शिफ्टिंग हियर. डायग्राम. तो यहाँ पे हमने एम्पलीफाई करने टाइम हमने पहले C पॉइंट वी फिक्स्ड बाय द बाइसिंग सर्किट.
then we give this red color ka input, which is obviously at the input side, and then we get the output current and output voltage. So output current is in phase with that input, but output voltage is not in phase with the input voltage. In fact, it is 180-degree phase shifted that we have proved here. So ये 180-degree phase shift को आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? So when the input voltage, हमने देखा input voltage जब भी increase होता है in the positive half cycle, if input voltage is increasing, तो हमारा जो VCE है वो decrease हो रहा है. And that is how we concluded that there is a 180-degree phase shift in the input and output voltage of the amplifier. तो वही phase shift को address करने के लिए we have something which is called as the phase shift circuit. So now we'll start with the RC phase shift circuit. First we'll start with the basic simple RC circuit जो आपने शायद fundamentals में पढ़ा था. Simple RC circuit. So here I have capacitor, and capacitor जो shift देगा that I need to select at R. So VI, then capacitor voltage VC, and the resistor voltage VR, which is V also, because हम resistor के across output ले रहे हैं. The current which is flowing, I'll name it as IC. So let me draw the waveforms first, because the waveforms are basic one. So we'll start from right to left. I'll first draw the VO. This is VO. Okay. अगर हम ये VO रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं और रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो हो रहा है which is IC, so they should be in same phase. This is IC. Understood? I'll repeat. हम वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं. रेजिस्टेंस में देयर इज नो फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IC. सो IC एंड VO शुड बी इन सेम फेज. बट VI जो है, VI वो VI हमने कैपेसिटर एंड रेजिस्टर के अक्रॉस लिया हुआ है. So there is going to be some angle in between VI and IC. And obviously it is capacitive circuit. तो हमारा जो IC है वो VI को लीड करेगा. This is VI. And this IC is leading VI with some angle called as phi. This is phi angle. अगर यही चीज मुझे वेक्टर डायग्राम के फॉर्म में अगर ड्रॉ करनी है, so I'll draw it something like this. I'll take IC or current as a reference. Let's take current as a reference. So I will be in phase with VR, which is nothing but VO, and VR is also equal to IC into R. Right? Do not consider the lengths of the vectors. Okay, just consider the directions. Because I मैंने यहाँ पे दिखाया है, I should have been here, IC. When I multiply with R, it will become VR, like that. Okay. अब VC जो है, if IC is in this direction, तो VC जो है वो क्या करेगा IC को? IC should lead VC.
तो VC जो है वो यहाँ है. IC is leading VC. If you go clockwise, IC comes first, VC comes later. And VC is equal to IC into XC. XC is what? XC is the capacitive reactance, जो कैपेसिटर देगा. एंड ये दोनों का जो फेजर सम है, बिकॉज अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे, इफ यू अप्लाई केवीएल हियर बाय केवीएल, तो VI is equal to VC plus VO और VI. तो इन दोनों का फेजर सम of these two will be V. And the angle between IC and VI जो अभी यहाँ पे साइनोसाइडल वेवफॉर्म में बताया है, that is phi. So if you try to write expression for phi by trigonometry, it will be, because यहाँ पे R है, यहाँ पे XC है, it is actually equal to tan inverse means opposite upon adjacent. So tan inverse of IC into XC divided by IC into R. So IC is common, therefore phi is equal to tan inverse of XC upon R. So the values of XC and R will decide कि आपका phi angle कितना होना चाहिए. So output voltage leads the input voltage by angle phi. And who decides the phi angle? XC and RC. So you are the one, मतलब आप अगर सर्किट डिजाइन कर रहे हो, then you are the one who will decide XC and RC and who will decide phi angle also. So each of this, अगर RC सर्किट हमने देखा जाए तो आपको RC, XC and R, मतलब C and R के values decide करके you can choose the suitable angle. जनरली ये RC फेज शिफ्ट, अगर 180 डिग्री की फेज शिफ्ट अगर हमें अचीव करनी है, then it is achieved by 3 stage RC circuit and each stage हमें 60 डिग्री का शिफ्ट देगा. तो each स्टेज पे अगर 60 डिग्री का शिफ्ट हमें मिला तो फाइनली हमें 180 डिग्री का शिफ्ट मिलेगा. फाइनली the output will be in phase with the input. So I'll draw that 3 phase RC phase shift circuit. This is stage 1, stage 2 and stage 3. Here let us say this is my V in, जो एम्पलीफायर का V in है, एंड द आउटपुट जो हमें यहाँ पे मिलता है VO, it is 180 degree apart from the V in. This is C1, this is R1, this is stage 1. So in stage 1, जो हमारा stage 1 का आउटपुट, if it is V1, it will be shifted by 60 degree with respect to VO. VO जो पहले यहाँ पे था, V1 shift होगा by 60 degree angle. Now this is stage 2, C2, R2. So at second stage also you will get 60 degree का shift.
Now the VO was like this. आपको V1 यहाँ पे मिला. Now you will get V2 here. So this is 60 degree plus this 60 degree. Total 120 degree का phase shift मिलेगा. And finally, this is stage 3. You will get जो पहले VO यहाँ पे था, V in यहाँ पे था, V1 इधर हुआ, V2 इधर हुआ, एंड V3 जो है मेरा वो यहीं पे आएगा. सेम. So total ये the stage 1 gives 60 degree, stage 2 gives 60 degree, and stage 3 will give 60 degree. Total जो मुझे phase shift मिलेगा, it is 180 degree phase shift. Alright? V1, V2, V3 ये जो है ये voltages है across R1, R2, R3. I mentioned that here. V1, 2, V3 are voltages appear across R1, R2, R3 respectively. Now you need to select this R and C. R and C are so selected that अभी हमें एंगल कितना रखना है ईच स्टेज का, द फाई एंगल. फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला जो हमें मिला था tan इनवर्स ऑफ xp on r. That should be equal to 60 degree because अभी हमारे पास 3 stages है and each stage is expected to give you phase shift of 60 degree. तो अभी ऑसिलेटर बनाने के लिए जो हमें पॉजिटिव फीडबैक था वो हमने देखा जो रिक्वायर्ड था. उसके लिए जो बारखाउजन क्राइटेरिया A इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 वो भी हमने डिस्कस किया. जो आउटपुट हमें आ रहा था जो आउट ऑफ फेज था वो इनपुट के फेज में कैसे लेके आए उसके लिए हमें आरसी फेज शिफ्ट सर्किट यूज करना पड़ता है वो भी हमने देखा. नाउ फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर व्हिच इज देयर इन आवर सिलेबस. So right now I'm drawing the amplifier with JFET. Of course, anyone can use it. If you want, you can replace JFET with BJT and a respective biasing circuit can be also replaced. Because amplifier हम JFET से भी बना सकते हैं, FET से भी कोई भी FET से बना सकते हैं या फिर BJT से भी बना सकते हैं. So currently I am considering JFET. Now there will be 3 stages of phase shift. One more biasing resistance. Bypass capacitor. Grounding. The resistors which we need in the phase shift circuit. Now your
R and C's will be identical in all the three stages because आपको 60 degree का phase shift चाहिए in each phase. So they are going to be identical. And उसके बाद जो output आएगा that we are going to connect to the input side. The output which we will get here, we are going to connect it to the input side. तो एट द आउटपुट साइड अगर इनपुट पे हमारा इनिशियल वेव कुछ इस तरह का है विद अदर कलर, आउटपुट में हमें वेव मिलेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज वी विल गेट 180 डिग्री फेज शिफ्टेड, बट बाय दिस 3 स्टेज आरसी फेज शिफ्ट फाइनली जो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इट विल बी इन फेज विद द इनपुट, राइट. Name this is RL with RS. Yes. The fit amplifier is considered. BJT can also be used if you want. Phase of the signal at the input. For time being जो हम initial input wave देंगे, for time being we'll consider that there is some input. Assume that we have given some input. Assume the presence of signal. Input signal. We have given some input wave. It gets reversed, right? It gets reversed when amplified by amplifier. So whether it is your JFET, BJT, MOSFET, any type of amplifier होने दो, it gets reversed when amplified by amplifier. Output goes in feedback network, जो हमारा RC phase shift का network है, in feedback network. This F/B is the short form for feedback and N/W is the short form for network. Consists of three identical RC sections. Each RC section provides phase shift of 60 degrees. So total there will be phase shift of 60 into 3. 60 plus 60 plus 60. That is 180 degrees. Therefore, total 60 into 3, that is 180 degrees phase shift. Provided by the three-stage network. That network.
सो व्हाट विल हैपन नाउ, जैसे ऊपर बताया था कि आउटपुट जो है वो 180 डिग्री से फेज शिफ्ट होगा. तो नाउ माय आउटपुट एंड इनपुट आर इन सेम फेज. Therefore, output is now in same phase as input. And if, now we'll come back to the Barkhausen's criteria. If A into beta is equal to 1, this condition, if A into beta equal to 1 condition is satisfied. Oscillations will be maintained without any input, without external input. So the frequency, हम फाइनली क्या अचीव करना चाहते हैं? वी वांट टू अचीव द frequency of oscillation. So frequency at which RC network provides exactly, because वो RC है ना, जब C आ जाता है then there is XC, then your frequency will change. अगर XC का फॉर्मूला क्या है? It is 1/2 pi FC. अगर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो XC भी चेंज होगा. सो RC नेटवर्क वो फ्रीक्वेंसी जहां पे इट प्रोवाइड्स एग्जैक्टली 180 डिग्री फेज शिफ्ट. And obviously it will depend on frequency. FO, critical frequency, 1/2 pi RC square root of 6. This is there is a derivation for this. We don't require derivation. This is called as frequency of oscillation. And feedback factor जो बीटा होता है, it should be to satisfy that Barkhausen's criteria. Feedback factor of RC network should be beta is equal to 1 divided by 20. तो अगर हमें oscillations, if we want to start the oscillation, or self-starting oscillations A into beta, initially it should be greater than 1. अगर उसको खुद अगर oscillation start करने हैं, मतलब वो grow करने, जो case 2 मैंने बताया था, so therefore A must be greater than 29. So A into beta will become greater than 1. Only then oscillations will start. So the frequency जो हमें generate करनी है, that frequency, how we can change that frequency? अगर हमने by this formula, ये frequency of oscillation का जो formula है, अगर हमें ये frequency change करनी है, this is nothing but जो frequency आपको मिलेगी output में,
तो ये फ्रीक्वेंसी अगर मुझे चेंज करनी है तो मुझे आइदर आर चेंज करना पड़ेगा या सी चेंज करना पड़ेगा। तो लाइक वाइज जो सिग्नल जनरेटर हमने लैब में यूज किया, इट इज नथिंग बट ऑफ कोर्स इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ ऑसिलेटर, जहाँ पे आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिला। आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज, राइट फ्रॉम सम हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज तक आपने फ्रीक्वेंसी दिया एज एन इनपुट टू दैट एम्पलीफायर सर्किट। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें कैसे मिलेगा, दैट एफओ हाउ विल बी एबल टू वेरी। अगर हमने ये एफओ का फॉर्मूला में ये देखो 1/2 पाई, 2 पाई दे आर कांस्टेंट, √6 इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये आर एंड सी, तो इफ वी एबल टू वेरी द आर एंड सी, विल बी एबल टू वेरी द फ्रीक्वेंसी। तो जहां पे हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए वहां पे हमें ये आर या सी या दोनों को वेरिएबल रखना पड़ेगा। And those are available. I mean, you have seen that pot, which is a variable, which will give you variable resistance. There are some capacitors also, जहाँ पे आप वो distance and all change करके you can vary the variable vary cap भी होता है variable capacitor. So that is how हम ये oscillator में हमें जो frequency चाहिए we can set the frequency. So let me again go through the syllabus once again. Unit number 1, 2, 3, 4, 4 का ये पार्ट, फिफ्थ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बिफोर पीटी। फोर्थ का ये जो पार्ट बाकी था, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, उसका नीड एंड इम्पोर्टेंस। सो नीड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमें इतने सारे फ्रीक्वेंसीज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज हमें रिक्वायर्ड है इन द वेरिएबल सर्किट्स, इवन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इवन इन हीटिंग। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज एम्पलीफायर का जो आउटपुट है इट इज 180 डिग्री फेज शिफ्टेड, और उसको अगर हमें इनपुट के फेज में लाना है देन वी नीड आरसी फेज शिफ्ट सर्किट, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, दैट इज हाउ इट इज फॉर्म। ऐसा नहीं है कि ये एक ही ऑसिलेटर है, देर आर वेरियस ऑसिलेटर लाइक ट्यून्ड ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, बट हमारे सिलेबस में दिस वाज इंक्लूडेड, so I conducted this in the lecture. I think almost 100% syllabus हमने पूरा कवर कर लिया है अभी, and I declare that the syllabus for elements of electronics, a course in third semester, is over.